Hi everyone, welcome back to Super Kalam. So, we are starting the revision series again. And in this revision series, what are we going to do? We are going to cover, because Prelims 2026 is just around the corner. So, we are going to cover all the important subjects in Prelims. And in those subjects, we are going to revise them holistically, completely through previous year questions. Because PYQs ही हैं जो आपके रियल मॉक टेस्ट होते हैं. आप लगा लो 10 मॉक टेस्ट बाहर, कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द ओनली सोर्स थ्रू विच यू अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी थिंक्स. डोंट यू थिंक सो? जो क्वेश्चन सेट करने वाली बॉडी है, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है, अगर उस क्वेश्चन पेपर से ही नहीं आपने समझा क्वेश्चन बनाने का, सॉल्व करने का तरीका, तो फिर आप कैसे उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो? आपकी तैयारी इनकम्प्लीट रहेगी. In this series, we are going to cover all the important subjects: polity, geography, environment, science and tech, history. History may be ancient, medieval, modern. Everything we are going to cover for revision. But we are starting today with geography. And we are going to revise geography through previous year questions. Are you ready? Past trends देखेंगे, PYQ solve करेंगे. क्लास के बाद assignment भी मिलेगा. Telegram community join करो जल्दी से. In the description box the link is given. Download the Super Kalam app. PYQs practice कैसे करेंगे? It is free on the app, don't worry. So let's start, and in the comment section, tell me your year of attempt. Is it 2026 or 27? Because this session, this class is relevant for both the attempts, but you have to tell me. I am your mentor and teacher. I need to be, transparent. You need to be transparent with me, right? And I need to be transparent in what I am going to teach, right? So let's get started, everyone. Before we start this session, first let us understand the trends, because if we don't understand the trend, to understand what to study and what not to study, what to skip, that would become really tough. तो सबसे पहले ट्रेंड समझते हैं. We'll go to Super Kalam. In the past trends and analysis of prelims, you will notice in geography they have divided geography into physical geography, world geography, right? अब आप यहाँ पर देखोगे, from physical geography 7 questions were asked in 2025 prelims, that means 14 marks. World geography 5 questions were asked, that means 10 marks. Indian geography 1 question, that means 2 marks, right? यानी कि 25 के अराउंड मार्क्स आपके ज्योग्राफी से आ ही रहे हैं. आप स्किप कर ही नहीं सकते ज्योग्राफी को. ओके, यू कैन नॉट स्किप ज्योग्राफी एट एनी कॉस्ट. आगे बढ़ते हैं. इफ वी लुक एट द डिफिकल्टी एनालिसिस ऑफ 2025 प्रीलिम्स पेपर, 33 क्वेश्चंस वर इजी, 32 वर हार्ड, 35 वर मीडियम, राइट? यानी कि हार्ड और मीडियम को अगर कंबाइन करें तो इजी क्वेश्चंस हमारे थोड़े कम ही थे. And multi-statement questions were asked in quite a large number. Now similarly, if we go to 2024, you will notice world geography say 8 questions. In 2025 world geography had 5 questions, 2024 8 questions, 16 marks. Physical geography 8 questions, again 16 marks. Indian geography 4 questions, right? तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट जस्ट ignore these topics, ignore this particular analysis. Now we are going to start with the practice, with the revision. Before we start the revision, make sure after this particular session you install the Super Kalams app, because we are going to practice PYQs here. Let's start. Now, when we talk about geography, let us understand what UPSC is testing when it comes to geography. UPSC is basically testing interlinkages, maps, your understanding and awareness of maps, your understanding and awareness of locations, logic, how to apply logic while solving a question. For example, question is on jet stream या western disturbance के ऊपर question है, तो आप कैसे logically देखते हो कि what is the impact of jet streams on Indian weather, what is seasonal shift, हाउ द डायरेक्शनल इम्पैक्ट इज देयर ऑन वेदर. तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी टेस्ट करता है. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिवाइज थ्रू अ particular previous year question, we are going to first understand why UPSC asked this question. Then we'll understand what concept it was actually testing in the question, and how to revise this particular topic in 10 minutes next time. This is the parameter through which we are going to conduct this class. Now, what are the topics that we are going to cover? जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. ऑलराइट, अब मैं एक सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने लेती हूँ. आई विल टेक अ सैम्पल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सो वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2020 एंड इट इज रिलेटेड टू साइक्लोन्स. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओनली का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट.
In many cases, when there is extreme statement, it is wrong. Then second statement, only some cyclones develop an eye. Again, only word आ गया. Then temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surroundings. आपको बताना है which statement is correct. अब एक एक स्टेटमेंट को ना यहाँ पर हम डिकोड करते हैं. तो आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे सो दैट वी कैन decode the statement very nicely. Now when we look at the first statement, ठीक है, statement 1 को देखो. Statement 1 is saying jet streams occur in the northern hemisphere only. Now is this statement correct? No, it is not correct. First of all, only word आ जाता है तो वहां पर probability becomes high that statement is wrong. Now we know that jet streams they occur in both hemispheres, northern and southern. Both हेमिस्फेयर्स, दोनों ही हेमिस्फेयर्स में अकर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव पोलर जेट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सब ट्रॉपिकल जेट, राइट. तो दीज आर एग्जाम्पल्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए. अब यहाँ पर यूपीएससी का ट्रैप क्या है? स्टूडेंट्स एसोसिएट द जेट स्ट्रीम्स ओनली विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बायस आ जाता है यहाँ पर. दैट इज वाई इट वॉज अ ट्रैप स्टेटमेंट. Now we eliminate statement 1, ये तो निकल गया. Now let's go to statement number 2. Only some cyclones develop an eye. So this is correct. Why it is correct? Because first of all this statement is there in NCERT also. ये तो NCERT में भी statement है, आपने पढ़ा ही होगा. Secondly, we know that weak cyclones और depressions जब होते हैं उसमें कोई eye नहीं होता. There is no center. Weak cyclones they do not have an eye. ओनली वेल डेवलप्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म अ क्लियर आई. तो सम स्टेटमेंट सही है इसके अंदर. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द टेम्परेचर इनसाइड आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स. रॉन्ग स्टेटमेंट. Why is it a wrong statement? Because the eye is a warm core system. Write it down. Warm core system. जो eye होता है साइक्लोन का बहुत warm होता है. टेम्परेचर inside the eye is higher. It is not lower. कम नहीं होता, higher होता है, right? तो again this is a classic UPSC misconception. साइक्लोन एक storm है जो cold है. No, cyclone eye is calm plus warm. That you have to remember. So here the correct answer is 2. Only second statement is correct. Now you have to understand one important aspect. When you look at this question, you have to ask a particular question to yourself. First of all, how many of you thought that jet streams are only in the northern hemisphere? Please answer it very honestly in the comment section. आप में से कितने बच्चों ने सोचा था jet streams सिर्फ और सिर्फ northern hemisphere में होते हैं, right? Because cyclone questions are never about destruction, they are about the structure. Always remember, whenever you are studying cyclone, do not just study about the impact of cyclone, study about the structure of the cyclone. Whatever phenomena you are studying, uska structure padho, kaise banta hai. If UPSC says eye of the cyclone, always think warm and calm, not about rain के बारे में मत सोचना हमेशा जब भी आई ऑफ साइक्लोन की बात हो रही है वार्म एंड काम टर्म्स आने चाहिए आपके दिमाग में, right? Here what did UPSC test? In case of jet stream, UPSC tested global distribution of jet stream. Where is it found? Cyclone I के केस में it's asked about the development stages. आई टेम्परेचर के बारे में पूछा है. तो नाउ व्हेन यू स्टडी साइक्लोन यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर. नाउ व्हेन यू स्टडी जेट स्ट्रीम्स यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन वेयर इट इज फॉर्म्ड. ओके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. This is why PYQs are better than reading books, because you read a book, you understand about cyclone, but how they are going to frame a question, वो tough हो जाता है समझना. Now let's have a look at this question. In the South Atlantic and Southeastern Pacific regions in tropical latitudes, cyclone does not originate. Direct question is not asked on cyclone. They are asking about the location where it does not or it does originate. What is the reason behind it? अभी समझ आ रहा है? Whatever topics you are studying, they will not ask direct question from that topic. They are going to ask indirect question to test your understanding on that particular topic. अब हमको ना इसमें से many of us will think the reason is low sea surface temperature, and that sounds logical also.
But UPSC is asking something more fundamental and atmospheric, not oceanic. So what is usually UPSC is asking here? Not why cyclones weakens, no. But UPSC basically is asking, UPSC आपसे क्या पूछ रहा है? डायरेक्टली साइक्लोन क्यों वीक हो जाते हैं वो नहीं पूछ रहा आपसे. UPSC is asking the cyclone genesis. This is very important. The cyclone, the cyclone genesis. They are asking why they do not originate. Cyclone genesis, it needs, write it down, it needs first initial convergence, convergence, second the rising air, and third low pressure seed. These are the three things which a cyclone genesis requires, and this seed is ITCZ. South Atlantic and Eastern Pacific regions. What is the reality? These regions they have persistence. Write it down. They have okay, pen kharab ho raha hai shayad. Yes, they have persistence, subsidence, which means they have descending air, and they are dominated by subtropical high pressure belts. They are dominated by subtropical, write it down, subtropical high pressure belts. ITCZ की अगर हम बात करें ना, तो ITCZ, it is weak, it is fragmented, or it is absent. It rarely shifts into these basins. So if there is no ITCZ, there is no convergence, there is no birth of cyclone. अगर ITCZ ही नहीं है तो कन्वर्जेंस भी नहीं होगा, तो साइक्लोन भी नहीं होगा. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी. ITCZ seldom occurs over here. That is why cyclone formation यहाँ पर नहीं होता है. Always remember, atmospheric convergence, that is ITCZ, it is the initiation of cyclone. Then Coriolis force, it is the organization of the cyclone. And the sea surface temperature, it basically relates to the intensification of the cyclone. If the first step fails, cyclone never forms, no matter what is the sea surface temperature. अगर ITCZ ही नहीं है तो साइक्लोन ही नहीं बनेगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द ट्रिक टू आंसर दिस क्वेश्चन. यही ट्रिक यूज होना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो हियर यूपीएससी इज टेस्टिंग, when you are studying cyclone, are you studying the causes of the formation of cyclone or not? That is what UPSC is testing over here. यही चीजें UPSC टेस्ट कर रहा है. Okay, now let's go to another important topic. Let's have a look. Let's have a look at this particular question. This is not an environment question, this is basic physical geography question which is targeting earth's energy balance, है ना? तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट लेट अस रीड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere on earth. Moon is the best example here to understand, because there is no atmosphere, it is extremely cold, right? Now second statement, heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains earth's average temperature. देखो, एटमॉस्फेयर ना एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, एक हीटर की तरह एक्ट नहीं करता, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है. व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस इन एनसीईआरटी, देन यू कैन आइडेंटिफाई इफ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. Statement 3, Earth's the atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. देखो, we have to understand that greenhouse gases are transparent to sunlight but they are opaque to heat. Now you can answer if third statement is correct or not. ठीक है, तो मान लो yes, all the above statements are correct, है ना? So here Super Kalam gives you explanation also. देखो, वैसे तो स्टेटमेंट 1 यू नो इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेक्ट माना गया है. नाउ लेट अस सॉल्व दिस स्टेटमेंट, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वन बाय वन. ठीक है, now we have also taken into consideration UPSC's आंसर की. ऑल राइट, स्टेटमेंट 1 पे जाते हैं. व्हेन वी गो टू स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट, एक सेकंड देना जरा, मैं इसको, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. व्हाई इज इट करेक्ट? बिकॉज विदाउट एटमोस्फेयर, अगर मान लो
एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इन दैट केस देयर विल बी नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, देयर विल बी नो हीट ट्रैपिंग भी नहीं होगी इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर. एंड इफ दीज टू थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, व्हाट विल हैपन, अर्थ का एवरेज जो टेम्परेचर होगा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इट वुड बी अराउंड 18 डिग्री सेल्सियस, राइट. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. स्टेटमेंट नंबर 2 पे जाते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर. दिस इज द डेफिनेशन लेवल स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द हीट बैलेंस mechanism. When you study these two terms, you can understand statement number 2. Because what does the atmosphere do? Atmosphere करता क्या है? Atmosphere absorbs, write it down. Atmosphere absorbs. What does it absorb? It absorbs the outgoing long wave radiation. Long wave radiation. It radiates it back to the earth. So atmosphere is acting like a thermal blanket, not like a heater, but like a thermal blanket. Okay? Statement 2 भी correct हो गया. Statement number 3 is also correct. Why? Because see, UPSC included this to check if students know selective absorption. Carbon dioxide की बात अगर हम करें, CH4 की बात करें, water की बात करें, they absorb, write it down, they absorb long wave radiation, not the short wave radiation. नहीं, long wave radiation को ये absorb करते हैं. So greenhouse gases are transparent to sunlight, but they are opaque to heat. That is why all the above statements are correct. Here, the UPSC marked this question as easy. Why? Because there is no trick. Direct statements हैं, direct definitions हैं. You cannot use elimination method here because these are direct statements. Only conceptual clarity is required. Okay? So that is why this is important. साइक्लोन के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स चेक कर रहा था यूपीएससी. इस क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनामिक्स चेक हो रहा है आपका. सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द एटमॉस्फेयर स्टोर्स हीट, आप एटमॉस्फेयर तो पढ़ते हो बट व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ इट स्टोर्स हीट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई साइक्लोन्स इंटेंसिफाई ओवर वार्म ओशन. ठीक है, दिस इज द इंटर रिलेशन दैट आई टोल्ड यू विच यूपीएससी टेस्ट्स. Atmosphere maintains Earth's habitable temperature through greenhouse effect by trapping outgoing long wave radiation. Only that you have to remember. यही आपको याद रखना है. And all these questions that we have solved, they are taken directly from NCERT. तो अगर आप geography पढ़ रहे हो, NCERT skip नहीं कर सकते हो. You cannot skip NCERT. So here I have prepared for all of you final revision checklist. What are the final topics that we have to revise? एटमॉस्फेयर इन हीट बैलेंस रिवाइज करना है. मैंने उसके साथ शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, हाउ टू रिमेंबर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस जस्ट लाइक वी सॉल्व नाउ. साइक्लोन्स पढ़ना ही पढ़ना है. इट इज वेरी हाई यील्ड टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी. ओशन एटमॉस्फेयर लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स, वेस्टर्न मार्जिन्स, ईस्टर्न मार्जिन्स. सो आई हैव इंक्लूडेड ऑल द नोट्स इन दिस रिविजन चेकलिस्ट. मस्ट रिमेंबर मैप्स आर ITCZ का मैप, cold currents का map, warm pools का map, global cyclone basins, and I have also included PYQ pattern awareness over here, right? So if you download Super Kalam's app and if you join our Telegram community, I'll be sharing all these notes over there. वहां पर ये सारे नोट्स मैं शेयर करूंगी so that you can revise the core topics in a very nice and engaging manner. All right? So let me know in the chat section. Chat section में बताना if you have installed the Telegram community, if you have joined the Telegram community of Super Kalam or not, so that once I start giving test, I'll be sure कि आप लोग उस test को access कर पा रहे हो. Now that we have covered the class, the homework for all of you is join the Telegram community. I'm going to start the practice of previous year questions after this session, 1 hour after I upload this session on Telegram. And second important aspect is on the Telegram community, you have to share your notes that you've made in this class. वो तो share करने ही करने हैं, बच नहीं सकते उससे आप. Okay? And do let me know what is the next subject that I should pick for complete revision. कौन सा next subject उठाऊं, जल्दी से बता दो comment section में.